வண்டியில என்னோட பேக் அது பேக் ஒரு நிமிஷம் கொண்டு வாங்க. ரொம்ப தூரமா இருக்கா? பிகாஸ் அதுல இது தேவைப்படாது. இல்ல கொடுங்க எனக்கு. मैं खड़ी हूँ, ये टीवीके के ऑफिस के सामने है, उनकी हेडक्वार्टर्स के सामने. अभी भी यहाँ पे कार्यकर्ता आने हैं, बट सबसे अहम बात है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं खड़े हुए हैं, ये सारे उनके समर्थक हैं. ये आए हैं मलेशिया से खास उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए. यू हैव कम हियर बिकॉज यू लाइक विजय. That's right, because he's the hope for the future, the hope for the Tamil Nadu. होप फॉर द फ्यूचर, होप फॉर तमिलनाडु. अगर दिखाया है आपको मैं कि हर कोई यहाँ पे जो विजय के समर्थक हैं, सब अपने अपने शर्ट पे उनकी जो तस्वीर है उनको सिला के लेके आए हैं, और उनकी जो एम्बलम है वो है विसिल. उसको मार के यही कह रहे हैं कि तमिलनाडु में एक नई उम्मीद जग रही है. हम उनसे बात करना चाहेंगे. நீங்க சொல்லுங்க, இப்போ வெற்றி இப்போ டிவிகே கிதான், விஜய் கிதான், அவர் தான சிஎம் ஆவாங்க? அவர்தான் சிஎம் கண்டிப்பா. 130 இது வந்து முன்னாடியே டிசைட். You tell us in English. Okay, CB already decided. Anna 2 days back he told me that in the meeting, the party meeting, so don't anyone exit poll. That definitely the people give the good result on May 4th. So today we'll win the full majority. Anna is selected as the CM. So next 5 years Tamil Nadu is going to the great level. 5 साल के लिए पूरी तरह से दलपति ही मुख्यमंत्री उनका कहना है. पर अहम बात यह है कि जिस तरह से हमने देखा जब हम तमिलनाडु में हम गए थे, बहुत सारे लोग, वो नवयुवक हो या औरतें हो, वो उनकी कनेक्ट थी उनके साथ. और उनका ये भी मानना था कि देखिए मिठाई भी बांटने लगे, तब तक वो लोग चॉकलेट दे रहे थे, अब तो मिठाई भी बांटने लगे. और जो well, celebrations have started already outside the TVK main headquarters here. You can see that sweets are being given and they are being distributed between people. They are giving kudunga sir, kudunga. See, what is important to understand about this celebration is that because they feel it's a victory of every single supporter who has been with Vijay, who has supported him because of the promises that Vijay has made for the people. He had a connect. He had a youth connect. He had a connect with women as well. But the numbers also showing in his favor. And what's important is how they have come in numbers. And when we're seeing, especially this, don't go by the kind of situation you're seeing here, because Vijay also had said that you can celebrate in your own way, but wait, do not believe the exit polls, and that's what they have been saying. And if you notice also that how all the supporters are carrying a whistle with them, and they are announcing and they're saying this is a whistle of change, and this whistle is for the change in Tamil Nadu. We've seen people who have come also from Malaysia. There's people who have come from other parts of the state only because they wanted to show their support for him. It's also important to understand what was thought. When we also traveled across Tamil Nadu, we did find that there was a lot of surge of support for him. But the question that largely remained was, will that convert the kind of love for the real actor will actually convert in reality? Clearly it shows, the trends are showing, and that the reality is there. But it is also important to know how much in terms of how Vijay will. They all want to see him finally on the steps of Fort St. George as Chief Minister. Whether that will become a reality is something we need to know. But the people of Tamil Nadu have given in their mandate. With Vijay Karthik, Rohini Swami in Chennai for CNN News 18. ನಿರ್ಭೀತ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿರುವ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ಆಪ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರುವ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಹೀಗೆ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ.